Hey there, this is Pranshu Verma और start करते हैं अपना next lecture on capacitance. As you can see, I gave you this question in the yesterday class, so let's solve the question and then we do the next question. Okay, now here look, these two capacitors and these two are in parallel, so I am not going to solve this by the simple. I am going to simply just add them. Okay, now let's see, these were two in parallel, so this is the circuit will make, and the value of the equivalent capacitance will be 2. As in parallel, the capacitor will directly get added. Okay, now this 2 and this one, this 2 and this one, this 2 and this one are in series directly. Okay, and this one is also, these three capacitors are in series. Okay, so if I do 1 plus 1, 1 by 2, that equal to 2 plus 1 by 2, that will come equal to 5 by 2. The value of C dash or C dash will become equal to 2 by 5. As it is, this will be equal to 2 by 3. How? 1 plus 1 by 2. So 2, 3, this will be equal to 1 upon C double dash, A triple dash, yes, C triple dash will be equal to 2 by 3. So these capacitor will replaced by 2 by 5 and these will replaced by 2 by 3. Now these two are in parallel, directly in parallel. Okay, so the equivalent capacitance will be directly addition of these two capacitors. LCM will come out to be 15 and this 2 will be taken as common, 5 plus 3, that comes 8 into 2 by 15, that will come equal to 16 by 15 mu farad. This will be your answer and this should be your answer. आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर आएगा. ओके, नाउ अबाउट दिस the question which I gave you, okay, it was like this. okay, देखो इसमें कुछ नहीं करना, इसको उठा के इधर रख दो, इसको उठा के इधर रख दो, तो it will be like this, and you know this circuit very well. You know this circuit, this is a Wheatstone bridge, so the value of this circuit you can find easily. So as I do 2 questions on Wheatstone bridge, I think so, in the last class. So this was the 3rd question on Wheatstone bridge. okay, तो आप इसका सॉल्यूशन वही है जो पहले थे. okay, so that yesterday class was on the connection of capacitors that you have already watched. okay, and these were simple things. okay, जैसा रेजिस्टेंस में था वैसा ही सेम, वैसे एग्जैक्टली नॉट, जस्ट रिवर्स था उसका फॉर्मूला. okay, now today we are going to understand growth and decay circuit. growth, पहले तो ग्रोथ सर्किट देखेंगे, ठीक है, ऑफ कैपेसिटर. nothing I did, I just apply airplane mode on my mobile, so there will be no call. okay, now let's see growth circuit. growth circuit क्या होता है? actually in this circuit we can easily say the second name of this circuit as charging of capacitor. charging of capacitor. What will happen when a capacitor charge? What will happen when a capacitor charge? So let's get start. Assume there is a circuit, okay, and there is a voltage V plus minus, okay, and this is the capacitor. okay, now to have some current
we just put a resistance of R. Now let's see what will happen at t equal to 0. सारी कहानी, सारी स्टोरी स्टार्ट होती है t equal to 0 से. ओके, एट t equal to 0 वेयर वी स्टार्ट अवर एक्सपेरिमेंट. ओके, हमने एक्सपेरिमेंट जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से t equal to 0 स्टार्ट हुआ. ओके, सारी दुनिया वहाँ से बनी है. नाउ लेट्स सी. ठीक, हाँ, तो क्या होगा एट t equal to 0? एट t equal to 0 there will be a current will flow through this circuit which will charge this capacitor as the initial charge on the capacitor is 0. So capacitor will rapidly charge at t equal to 0. At t equal to 0, capacitor will rapidly charge. At t equal to 0, there is no charge on the capacitor and the current will be large. What will be the value of current at t equal to 0? Simply there is no resistance provided by the capacitor as it wants कि high से high current आए मेरे पास. Okay, so the current at this time will be simply equal to Ohm's law. According to the Ohm's law, I equal to V by R. Okay, now this will be the maximum current. As time increases, बढ़ता है आगे. Okay, what will happen? I decreases. Why? We see. Okay, I decreases, but Q on charge, on capacitor increases. I will decrease. I की वैल्यू डिक्रीज होगी, बट कैपेसिटर ऑन चार्ज ऑन कैपेसिटर, Q ऑन कैपेसिटर विल इंक्रीज होगा कैपेसिटर पे चार्ज. व्हाई इट हैपन्स? ओके, लेट्स सी. यहाँ पर when there will be a charge Q, it provides some voltage. Let it V naught. It is V naught. So it provide a V which will be equal to Q by C. Okay. Now as you know KVL, Kirchhoff voltage law, you have already studied current electricity, so you know what is KVL. Okay, if I apply KVL here in this circuit, so let's like this. Okay, minus to plus, V will be plus. I am going in the direction of current, so minus IR, and this will be a potential provided by the capacitor opposite to the direction of this V. So this will be like this. So current from here, you can say this current will be equal to this IR will equal to V minus Q by C, or I will equal to V minus Q by C divided by R. Yes or not? Yes or not? It is less than this current. It is less than this current. Okay, so we can say that the current will decrease, but the charge will increase as the initial time at t equal to 0, the capacitor was discharged, completely discharged, and after some time it will charge. Okay, now I have to remove it because इसको लिखने का कोई फायदा नहीं. ठीक है. Now at t equal to infinity, first at t equal to 0, at t equal to infinity, what will happen? Capacitor will fully charged. Capacitor will fully charged. So if the capacitor is fully charged, so the current will flow through the circuit will become 0 as Q by C, the potential across the capacitor will equal to V naught. फुल्ली चार्ज होने का मतलब यही है कि the potential provided by us in through the circuit will be equal to the potential of the capacitor. Okay, at that moment the capacitor will said as it is charged up. Okay, तो पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है, वही पोटेंशियल कैपेसिटर पे आ गया, तो हमारा जो कैपेसिटर कहेंगे हम, इट इज फुल्ली चार्ज्ड. ओके, आसान था ये. दीज टू कंडीशंस are to be obtained at t equal to 0 and t equal to infinity. Okay,
प्लीज़ उतारो उसको फटाफट, उसका मैं उधर वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू बी ए रैंडम टाइम टी। ओके, अभी तक हम t इक्वल टू 0 एक स्पेसिफाइड था, एक t इक्वल टू इन्फिनिटी स्पेसिफाइड था। नाउ वी आर गोइंग टू ऑन t इक्वल टू t एट एनी रैंडम टाइम t। ओके, हाँ भाई, मैं आई नो माई क्लास इज गोइंग लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोरिंग क्लास है ना, नो जोक। ओके, या राइट नाउ नो जोक्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई डोंट थिंक कि मैं अभी जोक मारने के लिए आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं आपको लोगों को जानता नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको पर्सनली बोलता है ना, थोड़ा सा रहता है। ओके, मैं जब आपको ऑफलाइन पढ़ाऊँगा, ठीक है, व्हेन आई टीच यू ऑफलाइन क्लासेस, you will get to know that I am a very comedian, a very big comedian. Okay, now let's see, look at here in this circuit. Okay, now at t, at time t, let charge on capacitor is कुछ भी मान लो, random q मान दिया। Okay, at any random time, at any random time, obviously बात है, charge is increasing, we know कि charge is increasing from 0 to q, capital Q. Okay, the current is decreasing in the circuit, we already know. Okay, in the at t equal to 0, current was maximum, that is equal to v by r, v naught by r, and at t equal to infinity current become 0. but at random time, जहाँ पर हमने कैपेसिटर का चार्ज मान लिया q है and current in circuit is equal to I at random time. Okay, let's see, it is small I. Okay, now let's apply KVL. Apply KVL again. In this time the current is small I, the charge is small q. Okay, हटाओ इसको। The capacitor of the capacitance of the capacitor is C. Now apply the KVL. Minus 2 plus, this is V naught. Now minus I into R into minus the voltage applied by the capacitor, that will become equal to minus Q by C, that equal to 0. Or from here find the value of I, that will come equal to V naught minus Q by C upon R. Take the LCM, that will come equal to V naught minus C, V naught C minus Q by RC. ओके, RC से कुछ और याद आ जाता है क्या? ठीक है, नहीं, ऐसी जगह नहीं। ठीक, तो I विल इक्वल टू V नॉट C माइनस Q बाई RC। ओके, मैं आपको सर्किट ही हटा दे रहा हूँ, क्योंकि सर्किट का कोई काम नहीं है। ओके, let's see, as you know, I is always equal to the rate of change of charge, okay, or rate of flow of charge with respect to time. So I can be written as dq by dt. Okay, dq by dt as equal to I, which will be equal to V naught C minus Q by RC. Okay, now cross multiply, T is taken to be here and this Vc minus Q is taken to here, so it will become dq by V naught C minus Q T dt by RC. This will be your equation. Okay, now in order to find, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हो आप, in order to find Q, integrate both side, integrate above equation. ओके, अब वो इक्वेशन को अपन लोगों को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। नाउ थोड़ा सा ऊपर से लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेट करो, इफ आई डू इंटीग्रेट डी क्यू वी नॉट सी माइनस क्यू एंड टी टी बाई आर सी को, तो वी नीड लिमिट. I think you know the integration. Okay,
all the rules of integration you know. Now we need the limitations of this integration. So like at t equal to 0, how was the charge? Charge was 0. At t equal to 0, what will be the charge? The charge was 0. We know that there was no charge on capacitor, and we are integrating this thing with the respect to of charge and this thing with respect to of t. So we need q and t values at random time. Okay, now let at t equal to t, charge is on capacitor is q. ये हमने लाइट किया हुआ है. ओके, माना है. सो नाउ दिस इज v1 upon v0 minus v0 c minus q. What will be its integration? I think so it will come equal to ln v0 c minus q. This will be minus. ओके, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन होगा नीचे जाके, तो माइनस क्यू का डिफरेंशिएशन -1 आएगा. ओके यार, आपको पता होगा ना ये भाई a माइनस बी एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस बी एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट विल कम ln a माइनस बी एक्स अपॉन माइनस b upon minus b. Okay, it will be the integration of it. Okay, you know these things. Okay, this is the mathematical formula. You can ask to your mathematics teacher, or as I told you, you can understand it. Okay, now let's see the limitations. You know the limit, how to apply limits. इनकी सबकी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को पता होगा. Now this dt, integration of dt with respect to integration of dt, what will be the value of dt? It will come t, and 0 to t limitations. So now upper limit first, lower limit बाद में. तो it will come ln v0 c minus q minus ln this will be 0, तो v0 c minus 0 upon माइनस. सो इट विल बी लाइक दिस. माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने एक स्टेप खा लिया. सो t माइनस 0 विल कम t. ओके, नाउ यू नो ए फॉर्मूला है, हटाओ नीचे का. ओके, यू नो अ फॉर्मूला कि भैया ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a अपॉन b. ln इज नथिंग बट log with the base of e. Log with base of e is known as ln. ठीक है, जिसका बेस e हो, एक्सपोनेंशियल हो, उसको हम ln बोलते हैं. यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल ही करा है. ओके, नाउ लेट्स सी. हाँ, so by applying this formula, what will we get? ln, this will come up v0 by c, v0 c minus q. Okay, equal to t by rc. Okay, or we can do the one thing also. What we can do, एक काम करो, do one thing. इससे क्या होगा, गड़बड़ हो जा रही है. ये जो माइनस है ना, this minus, take this minus out. This minus is taken to be here. Let this minus take to here. Okay, we can do this. Minus 1 is multiplied to this here, so minus will be go there. Okay, now apply the formula. So v0 c minus q by v0 c, and that will equal to v minus t by rc. Okay, now again I am going to apply a formula that ln x is equal to y, then x equal to e की power y. This is also a formula. Okay, you have to remember all these formulas. Okay, now so ln will replaced by exponential here, so exponential minus t by rc, this is the power. Okay, e की power minus t by rc, and this will come equal to
okay, what will be the value? V naught C minus Q by V naught C. Okay, V naught C minus Q by V naught C. Okay, is equal to e की पावर माइनस टी बाय आर सी, e की पावर माइनस टी बाय आर सी. ओके, नाउ लेट हियर कि आई कैन राइट दिस वी नॉट सी माइनस क्यू बाई वी नॉट सी को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई क्यू माइनस क्यू अपॉन वी नॉट बाई सी, और नॉट. मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको. आई कैन राइट इट एट. ओके, एंड हियर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, हियर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी. ओके, नाउ q by v naught c is here and this e naught is taken to be here, t by r c. 1 minus e की पावर minus t by r c is equal to q by v naught c. Okay, or q naught can be written as v naught c into 1 minus e की पावर minus t by r c, and this is your final form. This is the derivation what we are want to describe, okay, derive. यही फॉर्मूला है जिसको अपन लोग टाइप करना चाह रहे थे. Q इक्वल टू वी नॉट सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी. दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू विच चार्ज will be filled up in the capacitor, or the capacitor will charge according to this equation. Okay, according to this equation the charge will be filled up on the capacitor. उतारो इसको फटाफट, नोट डाउन करो. ओके, नोट डाउन कर लिया. नाउ लेट्स सी the assumptions that we have take that at t equal to 0, what will be the charge should be equal to 0. So let's see this equation is proving this thing or not. Put the value t equal to 0. So q will be equal to v naught c into 1 minus e की पावर minus 0. okay, minus 0, e की पावर minus 0. something की पावर 0 और minus 0 it will come equal to 1. किसी की पावर 0 होती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 क्या होती है, 1. so q naught will equal to v naught c 1 minus 1, that equal to 0. q must be equal to 0 at t equal to 0. This is the equation. Okay, let's see at t equal to infinity. At t equal to infinity, what should be the value of q? q will be equal to maximum voltage, maximum charge, है ना. q will be maximum, तो चार्ज हो जाएगा ना. और what will be the value of charge? The potential into capacitance. The potential into capacitance, that should be the value of maximum charge, capital Q, है ना. So let's see, जितना पोटेंशियल नीचे था हमारी इस पे बैटरी पे, उतना पोटेंशियल हमारे कैपेसिटर पे आ जाए, दैट मीन्स द कैपेसिटर इज चार्ज्ड. तो पोटेंशियल आ गया तो कितना चार्ज हो जाएगा उस पर, वी नॉट सी, है ना. तो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी देखो जरा, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी देखो. पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू एच इन्फिनिटी. सो यू विल गेट द वैल्यू वी नॉट सी 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गई. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी? याद रखिए, समथिंग की पावर माइनस इन्फिनिटी दैट मीन्स होता है 1 अपॉन समथिंग की पावर इन्फिनिटी, एंड समथिंग की पावर इन्फिनिटी इज डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0 आता है. सो दिस टर्म विल इक्वल टू 0. सो q विल कम इक्वल टू वी नॉट सी 1 minus 0 और v naught c. This equation is satisfying both conditions that we are assumed in before doing the derivation, that at t equal to 0 the charge should be 0, at t equal to infinity charge should be maximum, that we equal to v naught c by v naught c. Okay, so now it is just a thing that we are doing एकदम राइट कंडीशन में कर रहे हैं, जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं, इसीलिए बस केवल उसको दिखाने के लिए किया गया है. ओके, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज आरसी. आरसी इज नोन एज कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट.
ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट। RC इज इक्वल टू कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। और आप लोग RL सर्किट पढ़ चुके होंगे EMI में, एज यू हैव ऑलरेडी completed EMI, so you know RL circuit. In RL circuit 1/RL was tau, है ना? नहीं, sorry, L by R was tau, है ना? L by R was tau in the LR circuit, है ना? or RL circuit. Here R into C will come equal to tau. We say this as tau. RC equal to tau. Now let's see what is the significance of tau. Put the value of t as equal to tau. So Q will come equal to V naught C 1 minus e की power minus t by t, tau by tau. Okay, now tau by tau will become equal to 1, or this V naught C 1 minus e की power minus 1, or we can write it as 1 minus 1 upon e. As you know the value of E is equal to 2.3. So remember the value of 1 upon E will come equal to 0.37. 0.37 is the value of 1 upon E. It is a mathematical value, you can find also. But यदि याद रखोगे तो टाइम बचेगा। तो if 1 upon E is equal to 0.37, so Q will equal to V naught C 1 minus 0.37. और 1 minus 0.37 will come equal to I think तो 0.63. Okay, now this is V naught C. What is V naught C? Maximum charge. I can represent it by capital Q. So I can say in growth circuit, write it down this sentence कि in growth circuit capacitive time constant tau is that time in which capacitor is charged by 63% of its maximum value. It is 0.63, that is 63%. okay, 63%. तो मैंने क्या बोला? कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, okay, yeah, growth circuit of capacitor is that much time in which the capacitor is charged up to 63% of its maximum value. Okay, this is the significance of tau. Okay, now let's see यदि कोई बच्चा भैया उतार ना पाए गलती से, तो उसको एक काम करना चाहिए, पीछे जाए और दोबारा से मैं उतार ले। ठीक है, नाउ एज वी नो करंट इज इक्वल टू dq by dt. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ I. यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट Q. V naught C 1 minus e की पावर माइनस t by RC. ओके, या RC को आप टाउ भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर. सो V naught C is a constant, so it will go out. Differentiation of 1 will become 0, and e की पावर माइनस t by RC will same as it is upon RC. ओके, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, क्योंकि एक तो माइनस पहले से ही है यहाँ पे और दूसरा माइनस RC लेके आएगा डिफरेंशिएशन के साथ. सो V naught C by RC into e की पावर माइनस t by RC, और C से C will cancel out, so I will become equal to V naught by R e की पावर माइनस t by RC. This is the value of current. This V naught by R is the maximum current that we have already at t equal to 0. t equal to 0 पे जो करंट थी वो यही थी, V naught by R, है ना. So this is the whole derivation of electric growth circuit of capacitor या charging circuit of capacitor. उतार लो इसको फटाफट. Now we are going to do a important thing, a graph. Okay, now let's see a graph. बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया ना लेक्चर, कंप्लीटली सीरियस हो गया, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी.
Now a graph between charge and time according to this equation. Charge and time. At t equal to 0 charge was 0, at t equal to infinity charge was maximum value. Let's see, this is the maximum value and the maximum value is v naught c. At t equal to 0 the charge will 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे जाके v naught by c होगा. दैट मीन्स ऐसे. This will be the graph between charge into t. Okay, ये ग्राफ होगा according to this, and the tau will be like here. This time is equal to tau. Okay, जहाँ पे जो हमारा चार्जिंग होगा Q will be equal to 0.63 times of Vc, मतलब 63% चार्ज हो जाएगा. Okay, this will be the significant of charge with respect to time. Okay, and let's see the graph between current and time also. This is current, this is time. Let's see, v by r e की power minus t by rc. At t equal to 0 current will maximum. At t equal to 0 current will maximum, that is v naught by r. Okay, and at t equal to infinity I will become 0. So here कहीं को, so this graph will be like this. Okay, now these graphs shows that the current will be maximum at t equal to 0 when the charge is 0 in the capacitor, and the charge is maximum at t equal to infinity when the current will become 0 at t equal to infinity. These graphs are very very important. Okay, मैं हमेशा बोलता हूँ सब बच्चों को अपने, okay, सारे स्टूडेंट्स को कि ग्राफ हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं. ग्राफ इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ओके, ऑलवेज रिमेंबर इट. उतारो इसको फटाफट, उतार लो. चलो, नाउ वी सी द नेक्स्ट thing. This is a small derivation. decay circuit और discharging of capacitor. And after this derivation capacitor is completed. Okay, so now after this we are going to do some numericals on capacitor. Okay, let's see. Okay, decay circuit, that means discharging of capacitor. So initially capacitor should be charged. Okay, capacitor should be charged initially, after which now it will discharge. If it isn't charged, चार्ज ही नहीं है तो डिस्चार्ज कहाँ से होगा. ओके, सो पहले हमने चार्ज कर लिया है, तो एट टी इक्वल टू जीरो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इंटू वी, विच इज मैक्सिमम. ओके, एंड current is also maximum. What will be the value of current? The potential provided by the capacitor divided by R. Okay, the value of this will be Q by C, V की value Q by C into R. This will be the current at t equal to infinity, at t equal to 0. Now let's see at t equal to infinity. These two conditions are important. At t equal to infinity, the capacitor is completely discharged, मतलब charge on capacitor becomes 0, and the current is also 0 because current is provided by the capacitor. If capacitor is discharged, तो current ही कहाँ से आएगी, है ना? current ही कहाँ से आएगी. ठीक है. Now let's see at random time, at time t, कोई रैंडम टाइम पकड़ लो, ऑब्वियस सी बात है, कोई रैंडम टाइम पकड़ लो. एट रैंडम टाइम टी Q इज इक्वल टू हाउ मच, C इंटू वी. ओके, Q इक्वल टू C इंटू वी और I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C इंटू R. ओके, नाउ यू नो द I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो C बाई R. ओके, एट रैंडम टाइम टी पे है ये सब चीज़ें. ओके, सो डी क्यू बाई क्यू
dt by CR. These steps are familiar to you now as we have already completed it. Integrate both sides at t equal to 0. Charge was maximum, charge is maximum, capital Q. At t equal to something t, charge is Q. Okay. Now integrated 1 upon Q. What will be the value of 1 upon Q? That will come equal to ln Q, and कहाँ से कहाँ तक, Q to Q. Okay. At this will be equal to T by CR into 0 to T. Okay, let's see here. This is I, value is of I is decreasing, मतलब dq जो है वो decreasing है, तो we have to use a minus sign in dq. Okay, as dq is decreasing, the final value of charge is less than initial value, so minus dq by dt should be taken here. Okay, so let me correct this thing. Okay, so it will become like this, or minus sign, we can take minus sign here. Okay, like we did before. Now this is a capacitor, this is a resistance, and I am removing this. It was a simple circuit, you can remember it or you can watch on your notebook. So put the limits, ln q minus ln capital Q, which is constant, okay, is equal to t, लिमिट इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा t by RC, which is of negative. Now ln A minus ln B, that will come equal to ln A upon B. मैंने log लिख दिया, log लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन log लिखने में मेरे को एक प्रॉब्लम आएगी कि आई हैव टू इंट्रोड्यूस बेस और रिप्रेजेंट अ बेस. अब मेरे को बेस लगाने की जरूरत नहीं है, ln लिखने का मतलब ही बेस मतलब e हो गया, minus t by RC. Now this ln is taken to be here, so as exponential form, so q by q will equal to minus e की power minus t by RC. Okay, or q will be equal to q into e की power minus t by RC. This is your formula of charge. Okay, this is your formula of charge. और उतार लो फटाफट, मैं बीच का हटा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी करनी है इसमें. ओके, नाउ लेट्स सी, if I differentiate this equation dq by dt, then I get I current. So I will come equal to, differentiate it, q is a constant, maximum value of charge. Okay, e की power minus t by RC, differentiation of RC, that will come equal to 1 upon RC. Okay, so current will equal to come equal to minus q by RC. q by C can be written as voltage, q by RC can be written as voltage. Okay, so I will equal to minus I, the V by R is the maximum current, V by R was the maximum current, so we can put this like this, and this is come equal to minus. It is showing that the value is decreasing. I equal to minus I max into e की power minus t by RC is showing that value of current is minus, in negative. So we should use the value of I as minus dq by dt. So we should apply a negative sign advance. Okay, एक साइन नेगेटिव का एडवांसली लिखना होगा ताकि जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे ना आए. ओके, जो वैल्यू है हमें पॉजिटिव ही मिले. नाउ अगेन this RC is the capacitive time constant. Okay, this RC is capacitive time constant, or you can easily say that time constant tau. Okay, now the significant of tau is changed, e की power minus t by tau. As t equal to tau पुट करोगे तो q इक्वल टू आएगा q इंटू ई की पावर माइनस टाउ बाई टाउ. टाउ बाई टाउ विल कैंसिल आउट और दिस विल कम इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 और q इंटू 1 अपॉन e. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन e एज आई टोल्ड यू बिफोर, 0.37. so the value of the definition of tau
can be written as the capacitive time constant of a decay circuit, okay, of capacitor can be defined as the time at which the charge on capacitor remains 37% of initial charge, ठीक है, 37% ऑफ इनिशियल चार्ज, जस्ट रिपल ऑफ 63। ओके भाई, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और मैंने काफ़ी कंटेंट आज दिया है ना। गिर गया। नाउ लेट्स सी द ग्राफ बिटवीन Q and T. What was the value of Q? Q is equal to capital Q into e की पावर minus T by RC. Okay. Now the value of the relation between Q and T. At T equal to 0, charge is maximum. At T equal to 0, charge is maximum Q. Okay. And T equal to infinity, charge will get discharged. Charge will become 0. So the graph will be like this. निगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ। मैथ्स वाले सर आपको बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। नाउ लेट्स सी द कर्व बिटवीन करंट एंड आई। करंट की वैल्यू भी आई मैक्स इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, मतलब करंट भी मैक्सिमम होगा एट टी इक्वल टू 0 और मिनिमम होगा इन्फिनिटी पे, तो सेम कर्व बनेगा। बट डोंट जॉइन दीज लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन अलग अलग रहनी चाहिए, ये लाइन अलग अलग रहनी चाहिए, इनको मिला मत देना, यदि मिला दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये मिलेगी जाके इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी कभी नहीं आता दुनिया में, है ना, इन्फिनिटी कभी नहीं आता, तो उतार लो इनको भी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने समझाया पूरा डीके और ग्रोथ सर्किट आपको अच्छे से समझा दिया मैंने। यदि आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फ्रेंकली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई हाउ नहीं हूँ, मतलब लाइक आई एम नॉट क्या बोलते हैं उसको आप लोग, घोस्ट, है ना। आई एम नॉट अ घोस्ट, आई एम जस्ट होस्ट, ठीक है, आई एम अ होस्ट। तो ट्राई टू बी फ्रैंक विद मी। यदि आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, ओके, ऑन व्हाट्सएप, ओके। और किसी को कोई समस्या हो तो यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो उतार लो इसको, और आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।